Okay. Good afternoon, students. Here I am to discuss about a new topic, materials, metals and non-metals. Now let us start from basic one first word, material. What is a material? Padarth, matter, whatever you call it. What is a material, beta? Everything that is present in our surrounding, everything that it is made up of, कोई भी चीज किसी भी चीज से बनी है, that substance is called material. Okay, or matter in science we call it. Now matter have some properties also, है ना? What are the basic properties that we know about? कि matter का matter has some mass. मैटर ऑलवेज हैव सम मास, कि उसके अंदर कुछ न कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ न कुछ मैटर प्रेजेंट होगा. ओके, सो मैटर ऑलवेज हैव सम मास प्लस इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस. If there is any substance having mass, then it will always occupy some space. Okay, so जो भी चीज हमारे surrounding में है that is having mass and occupying space, that thing will be called material or matter. ओके, अब एवरी मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, हर कोई मटेरियल और मैटर किसी न किसी बेसिक पार्टिकल से बना होता है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ना, सेल से मिलके बनी है. तो हर एक मटेरियल छोटी से छोटी एक यूनिट होती है विच इज कंबाइंड टुगेदर टू मेक दैट मटेरियल. तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है जो हमारे मैटर को बनाता है, दैट इज कॉल्ड एटम. व्हाट इज इट? एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल. Okay, now atoms combine together and form our molecules, है ना? Form our molecules, and now these molecules form our matter. Okay, material. Now this material are of three types generally in science. कि तीन टाइप के materials हम generally classify करते हैं उनकी कुछ properties के basis पे, और वो तीन टाइप कौन से हो गए? metals, non-metals and metalloids. Okay, now in today's video we will only talk about metals and non-metals. Okay, now metals की कुछ properties होती है बेटा. कौन सी properties होती है? We will compare non-metals and metals on these properties today. Okay, now first property, physical properties we are talking about right now. हम सिर्फ आज physical properties के बारे में ही करेंगे. And then first one physical property, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं स्टेट, बेसिक वन, that in which state these metals and non-metals are present. Okay, metals are generally present in solid state. Solid metals generally solid होती है, but there is an exception also, that is our mercury, Hg. Mercury is liquid. Okay, and non-metals are present in different states. Okay, उनके लिए specific नहीं है कि सारे के सारे non-metals solid में ही होंगे या फिर liquid में. Non-metals are generally present in solid state also, and they are present in gaseous state also. In solid state like carbon, है ना, and our sulfur, phosphorus, ये सारे क्या है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है हमारे नॉन मेटल्स. ओके, गैसियस स्टेट में जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओके, हीलियम, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो, ब्रोमीन, Br. Bromine is a non-metal that is present in लिक्विड स्टेट. ओके, मेटल्स में लिक्विड स्टेट में कौन प्रेजेंट है? मरकरी. एंड इन नॉन मेटल्स इन लिक्विड स्टेट ब्रोमीन इज प्रेजेंट. अंडरस्टूड? नाउ आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, है ना? हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली hard in nature. Still exceptions are there. Okay, what is the exception?
कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है, मेटल्स हैं, एंड दीज आर सॉफ्ट इन नेचर, वी कैन कट दीज विद नाइफ ऑल्सो, चाकू से भी कट कर सकते हैं, दीज आर एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम। इनके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ओके, नाउ नॉन मेटल्स, non-metals, some non-metals are hard also, but not up to that much extent. Okay, when we apply pressure on non-metals, जब हम उनके ऊपर force लगाते हैं, then these break down easily, break down into pieces. So non-metals are generally soft in nature, and since they break down into pieces, that's why they are brittle also. So non-metals are soft and brittle in nature. Okay, exception is also there. Chemistry is full of exceptions. Okay, science is full of exceptions. Now one exception is there, diamond. Diamond made up of carbon, but it is the hardest material known on the earth. Okay, diamond एक non metal है, still it is hardest material. That's why one exception for non metal is diamond, and it is very hard in nature. Understand? इसके अलावा जो metals gaseous state में है वो तो automatically soft ही है ना, they are not hard, but some metals are brittle also in nature. Non metals are brittle also in nature, they break down when we apply force on them. Okay, now our third property is malleability. Malleability, what is malleability? This is the property or tendency of any material to convert into thin sheets when beaten by any hammer. Okay, by hammer, when we beat any material, if it convert into thin sheet, पतली चादर बन, malleability. ओके, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, malleability. एंड malleability इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, all the metals which are present, when we beat them and put force pressure on them with a hammer, then they will convert into thin sheets. Okay, and so metals are called malleable because of this tendency of malleability present in metals. Okay, gold हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ. आयरन की चादर तो हर किसी के घर में मिलेंगी है ना, जैसे हमारी विंडो पेन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ इट. सो द आयरन इज beaten down into thin sheets and then they are converted into making different structures. ओके, और गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करके उनको कट करके गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी भी बनती है. ओके, सो मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर. सिंस नॉन मेटल्स आर brittle, that's why they break up. Non-metals are brittle in nature, so whenever we beat them with hammers to convert into sheets, they will break down and can be powdered. For example, carbon हो गया, या फिर sulfur और phosphorus और iodine also. When we beat them with hammer, then they convert into powdered form. Okay, they convert into small pieces. Break down into pieces. Okay, next fourth one property is our brittle. Brittleness. Okay, brittleness is the property of non-metals we have done. The property of breaking down into pieces when pressure is applied on them. जब उनके ऊपर force या pressure apply करते हैं, तो अगर कोई material pieces में break down हो गया, then the property of that material is brittleness, and non-metals show this property. Okay, metals do not. Now after that, fifth one property is our ductility.
Ductility. What is ductility, beta? This is the tendency of any material. Tendency of material to convert into wires when stretched. जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं तो वो ऐसे खींच के तार वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ओके, एंड मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. मेटल्स के पास ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. All the wires, electrical wires or all type of wires are made up of metals only. कॉपर की वायर्स हमने सुनी है, एल्यूमिनियम वायर्स ऑल्सो, गोल्ड वायर्स ऑल्सो, है ना, गोल्ड वायर्स यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज. ओके, सिल्वर वायर्स ऑल्सो देयर. तो जितनी भी वायर्स बनती हैं all are formed of metals only. Okay, because they are ductile in nature. Metals can be converted into very fine wires. Okay, and non-metals are brittle, we know that, so they can again break down into pieces and cannot be converted into wires. Understand? After that, next property is our sixth one property is our boiling point and melting point. Metals are hard in nature, that's why their boiling point and melting points are always high. Okay, high melting point and boiling point. High melting point and boiling point. Clear? Since non-metals are soft in nature, that's why non-metals का boiling point and melting point is always less as comparison to the metals. Okay. Now, seventh one property is our tensile strength. Again, since metals are hard in nature, that's why metals have high tensile strength. Now, what is tensile strength? Tensile strength होती क्या है? It is the property of any material to tolerate any weight, without breaking down. Without breaking down. तो मटेरियल्स जो ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा वेट को टॉलरेट कर पाएंगे, दे विल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, एंड मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कैन टॉलरेट वेरी हैवी लोड्स. दे कैन पिक अप वेरी हैवी लोड्स विदाउट breaking into pieces. Okay, that's why metals have high tensile strength, but non-metals have low tensile strength. Okay, non-metals are brittle, so they break down into pieces. अगर ज्यादा weight उनके ऊपर डाल दिया, then non-metals break down into pieces and they have less tensile strength. Now, last one property is left, and that is our conductance. Conductance of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Okay, and non-metals are bad conductor of heat and electricity. Metals have some electrons and उनकी internal structure ऐसी होती है कि वो heat and electricity को अच्छे से conduct कर सकते हैं. They are good conductors. Metals are good conductors of heat also and electricity also. Okay, and non-metals
are generally poor conductor, or you can say bad conductor of heat and electricity. That's why non-metals are used for making insulation material for wires also, and insulation material for kitchen utensils handles also. Okay, now that is all about the physical properties of one exception is there, sorry, that skipped my mind. Non-metals are generally poor conductor of electricity, but there is an exception, that is our ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल्स के अंदर ब्लैक कलर का लिड हम देखते हैं ना, दैट इज ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ब्रिटल भी है नेचर में, आसानी से ऐसे टूट जाता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है पीसेस में, स्टिल इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब यहाँ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आज आर फिनिश्ड. नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज.